We were studying Gauss elimination. That method is used to solve a system of linear equations. Today we will study partial and scaled partial pivoting. Partial pivoting is used when you have AII, that the diagonal element becomes small or zero. So at each stage in elimination, we divide with AII. Okay. At first stage you divide with A11, मल्टीप्लाई निकालते थे जब A11 से डिवाइड करते थे फिर A22 से. So this element, this is central element which is called pivot. Pivot means central element. And if this element becomes small or almost zero, then to avoid division with zero, you can interchange the rows. Then we interchange the rows, and this process is called partial pivoting. So to avoid division with zero or small number, you just interchange the row. As we have seen in previous example, let us say you had zero here, but then you cannot divide with zero to get multiplier. So to avoid division with zero, you just interchange the row. अब इक्वेशन है, मैंने इसको फर्स्ट कहा, इसको सेकंड, इसको थर्ड. अब किसी को फर्स्ट कह सकते हो, लेट अस से दिस इज फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट कर दो आप, या फर्स्ट को सेकंड कर दो. सो यू कैन इंटरचेंज द इक्वेशंस. So you can say any equation first, any equation second, and so on. Okay, so partial pivoting is just another version of Gauss elimination in which you take care of division with small element. So I am illustrating this procedure by taking one example. We solve this example without pivoting as we did in previous lecture, and with the partial pivoting, and we will see the difference of answer. So solve the system using Gauss elimination. Without and with partial pivoting. Using 4-digit rounding arithmetic. So we have a restriction here. Do all calculation in 4-digit rounding. So system is 6x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to minus 2. Then you have 2x1 plus 2 by 3 x2 plus 1 by 3 x3 equals to 1. Then x1 plus 2x2 minus x3 equals to 0. So if you do all calculation in p by q form, like 2 by 3, 1 by 3, so these are exact value and you will get correct answer.
But as we have studied in first chapter, if you write 1 by 3 as 0.333, so this is an approximation. So due to this approximation, due to this rounding, or if you do chopping, error may occur. So also in this example, it is given that uh, that solution is calculated maybe using MATLAB with the long format. So use more digit to get correct answer. So you can compare your answer with these given answers. So firstly, I am solving this problem without any pivoting. So just usual Gauss elimination, and we write everything in 4 digit. So firstly, you write augmented matrix. What is this matrix? This is coefficient plus right hand side. So 2, and write everything in 4 digit. So full digit like 6 is 6, so you can write 6.00. It's okay. So 4 digit. You can write 2 as 2.000, but it's okay. You can write full number as, but 2 by 3 will be 0.6667 in 4 digit rounding. 1 by 3 will be 0.333. 1 will be of course 1. Then 1, 2, minus 1, this is 0. And you can put a label if you want. So this is first equation, second and third. So firstly you write multipliers. Okay, multipliers. वो क्या है? M21. You will delete 2 with the help of 6. So what is M21? This is 2 by 6. So 1 by 3. Write it in 4 decimal places. Then also it is wrong to write 1 by 3, just uh, because computer won't simplify first. So just compute 2 by 6. वो तो आप मैनुअली करते हो ना, simplify. So just write 2 by 6. So it is same 0.333, and then you delete this 1 with the help of 6. So M31 multiplier is 1 by 6. So in 4 digit it is 0.1666, and so 1667. तो अब क्या करोगे आप? एक बार आपने 0.33 मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को, और सेकंड में से माइनस कर देना है, और फिर आपने फर्स्ट को M31 से मल्टीप्लाई कर देना इससे, फिर थर्ड में से माइनस कर देना फर्स्ट को. So what you do elimination? So systematically you will write second as second minus multiplier टाइम्स फर्स्ट, और थर्ड को आप लिखोगे थर्ड माइनस मल्टीप्लायर 0.1667 टाइम्स फर्स्ट. तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट एज इट इज, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 एज इट इज. सो व्हाट यू गॉट हियर, आई एम राइटिंग वन एंट्री. सो originally you had 0.667. Okay, so 0.6667 minus multiplier this 0.333 times ऊपर वाला entry 2. Okay, also you can write next entry. Next entry ऊपर तो 2 ही आना है इसमें. So here you had 0.333 minus 2 times point, ऊपर वाला है 2 times multiplier, and here you had minus 2, here you had 1, so 1 minus 0.333 times ऊपर वाला entry minus 2.
Similarly here you had 2, so 2 minus 0.1667 times 2 overall entry है. And here you had minus 1, so minus 1.0.1667 times 2. Then third entry 0 minus 0.1667, this multiplier times first minus 2. So next table we just simplify all things. So 6 2 2 minus 2, this is 0 0. और इसको आपने प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना है सारी एंट्री को. फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 विद दिस. Okay, so how you simplify? 0.6667, 2 times this, so 0.6666, then subtract, so you got 0.301. Just write it in proper manner. And next entry is minus 0.333, then 1.667, 1.667 minus 1.333, 0.334. So you can put a number E1, E2 and E3. Now move to diagonal. With the help of this guy make 0 here. तो कैसे 0 बनाओगे उसको? Again you write multiplier which is M32. किसको डिलीट करना है? 1.667. किससे करना है? 0.001. So suddenly you got a big number, and this big number will create problem in further calculation. As this number is very large, so it will kill small number in plus minus, and that is called loss of significant digits. Okay, so what you write here now, E3 will be, third equation will be third minus multiplier times second at second stage. So new matrix will be first as it is, 6 2 2 minus 2. First two row as it is, minus 0.1.667. यहाँ पे 0 फिल कर देना ऑटोमेटिकली. यहाँ पे जो एंट्री नया आएगा that is 555 and minus 27790. So how you got this last entry? E3, this 0.334 minus 1667 times E2 multiply by this. ठीक है, 1667 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो, and suddenly you got a quite big number. Okay, so now you got upper triangular matrix. So if you see last equation, so this is the coefficient of x3. So 5555 x3 equals to this. So from this you find x3, and then use second equation to find x2 and first to x1. So this is called back substitution. So now we do back substitution. Using back substitution, last equation give you x3. So x3 is, you can check, this is minus 5.003. सेकेंड इक्वेशन में फिट कर दो, 0.301 x2 minus 0.333 x3. x3 is minus 5.003 equals to 1.667. सिंप्लीफाई इट. प्रॉपर वे में करना है इसको, इससे मल्टीप्लाई करना है, कीप 4 डिजिट राउंडिंग, फिर माइनस माइनस प्लस, इधर जाके माइनस करना है, फिर 4 डिजिट, फिर इससे डिवाइड करना है 4 डिजिट. You will get answer 0. You can check. Then first equation, 6x1 plus 2x2 is 0. Then 2x3
x3 is 5.003 equals to -2. Solve for x1. This is 1.335. And you can now compare with the exact answer. Comparison you can write here. अब वैसे देख ही रहा है कि x1 एग्जैक्ट क्या था, एग्जैक्ट माइनस सॉरी 2.6, x1 2.6, you got 1.33, quite wrong. x2 is given -3.8 and this is 0, and x3 थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बाकी all other are incorrect. And it's better you write relative error. तो एरर लिख लो, मान लो x1 ट्रू वैल्यू है, ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट जो आपने कंप्यूट किया है, लेट अस से दिस इज x1 स्टार, कंप्यूट relative error. So x1 true is 2.6 minus 1.335 divided by 2.6 multiply by 100, and you can simplify this expression. How much you got? Divide 2.6. 50%. Around 48% approximately. 50% की है almost. And if you compute second, x2 minus x2, and you can check, x2 is minus 3.8, your value is 0, and this is 100%. And if you write third one, so x3 is -5, you got minus 5.003. So how much you got? Hmm? 0.0 20%. 20% 0.2%. 0.06 I think. 0.06. So x3 seems correct, but you should get all correct. So x1 is quite wrong, error is too high. x2 तो बिल्कुल 100% error है. So your approximation is not correct. So अब हमने करना क्या है, इस प्रॉब्लम को सेम वे में सॉल्व करना है. So we use, अब एरर क्यों आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है 4 digit rounding. If you solve this problem in p by q form, जो हमने कल एग्जांपल किया था ना, अगर आपको याद हो, हमने नंबर्स को ये लिखा था 2/3 1/3, you will get correct answer. Or if you use 7 8 digit in MATLAB, or let us use long format, you will get correct answer. But due to this limited, you are getting incorrect answer. So what is the problem here? In first step there is no problem, but in second step, to get multiplier, you are dividing with a small number which is almost 0, and that's why you got suddenly a big number. So now we apply partial pivoting. तो पार्शियल पिवटिंग में आपने हर एक स्टेज पे चेक करना है. पहले इसको चेक करना है, फर्स्ट कॉलम को. 6 to 1 कौन सा बड़ा है? 6. तो 6 तो ऑलरेडी वहीं पे है, इट्स ओके, सेम चलेगा आगे. फिर सेकंड स्टेज पे यहाँ पे आ जाना, इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है? 1.667. सो यू इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड रो. बाकी सारा प्रोसीजर सेम है. ओके, so now we solve the same problem with partial pivoting. Partial pivoting. तो फर्स्टली आपका जो a11 था, मॉड चेक करना है. अगर -6 होता तो भी बड़ा है. सो मॉड a11 is 6, which is greater than जो उसके बिलो वाले हैं, a21 and
A31. So no row interchange is required. तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है. इफ यू वांट आई कैन राइट रीराइट इट अगेन. तो फर्स्ट स्टेप तो सेम चलना है. A11 सबसे बिगर है फर्स्ट कॉलम में, सो जस्ट जस्ट राइट फर्स्ट एज इट इज. तो फर्स्ट अब हमारा जो मैट्रिक्स था 6 2 2 -2 2 0.667 0.33. Here you had 1, then 1 2 -1 and 0. Say this is E1, this is E2, this is E3. You write multiplier M21, which is 2 by 6.333. फर्स्ट स्टेज दोबारा रिपीट कर देना आपने, ठीक है. M31 1 by 6 0.1667, and you write E2 as E2 minus multiplier times E1, and E3 will be E3 minus multiplier times E1. जो नया मैट्रिक्स बनेगा 6 2 2 -2 0 0.001 301 -0.333 1.667, and here you got 0 1.667 -1.33 0.334. This is E1, this is E2, this is E3. So this is the same as we did without pivoting. So now you check these two entry. Second stage, इन दोनों को check करना है आपने. Which one is bigger? Sir, third 1.6. So mod of A3, अब mod में लगा रहा हूँ, ये अगर माइनस होता तो भी बिगर है. एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं कि माइनस हो तो उसको छोड़ देते हैं. Mod, which is 1.667, this is bigger than mod of A22. अब A22 कितना है? 0.0001. So we interchange second and third row. और इस ऑपरेशन को हम शॉर्ट में ये भी लिखते हैं. आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो E2. So this means E2 will be E3 and E3 will be E2. तो जस्ट आपने चेंज करके दोबारा लिखना है इसको. ओके, फर्स्ट एज इट इज. यहाँ पे थर्ड लिख दो आप 0 1.667 -1.333 0.334. यहाँ पे सेकंड कर दो 0.301 -0.333 and 1.667. So this is my new E1, this is E2, this is E3. Now with the help of this one, you will make 0 here. Now apply Gauss elimination. So write multiplier. What would be multiplier now? M32, that is 0.301 divide. अब उल्टा कर देना ना आपने, पहले divide by 1.667. So this number is 0.40599. ये भी 4 डिजिट है. काउंटिंग आपने लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो से करना है. So this is 4 डिजिट राउंडिंग. ओके, सो थर्ड को आप क्या लिखोगे? थर्ड माइनस मल्टीप्लायर दिस वन टाइम्स सेकेंड. जो नया मैट्रिक्स बनेगा फर्स्ट टू रो एज इट इज.
here 1.667 minus 1.337, 0.3334, then 0 minus 0.332, 1.667. Okay, so now write back substitution. थर्ड को देखोगे तो ये x3 का कोफिशिएंट है, ये राइट हैंड साइड है. ओके, so use back substitution. This is x3 equals to 1.667. So x3 is minus 5.003. Second equation, 1.667 x2 minus 1.337 x3 equals to 0.334. Solve for x2. Now x2 is quite correct, minus 0.38. So minus 0.3801. First equation 6x1 plus 2x2, okay, plus 2x3 और x3 है minus 5.003 equals to minus 2. Solve it. So x1 is 2.602. Now you can check exact answer 2.6, so 2.6. x2 minus 3.8 minus 3.8. x3 minus 5, so minus 5.003. So you can check this is correct answer. So this is my solution, x1, x2, x3. You can write it as column vector, so 2.602. So in fact, we have solved the same problem in two way. First, usual Gauss elimination without any pivoting, and then we have done partial pivoting. And you can observe from this example, if you interchange the row, you try avoid division with small number, you will get correct answer in same format using 4 digit. Okay. So to get correct answer, either use more digits, 8 10 digit use करो या फिर आप partial pivoting करो. और Gauss elimination exact method, don't forget this provide exact answer provided you take care division with small number. Okay. Next version of pivoting is called that is known as scaled partial pivoting. This is another version of pivoting which picks relatively large number as pivot element. यानी कि आप जिससे डिवाइड करते हो वो अपनी रो में relatively bigger हो. तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? इस प्रोसीजर में एक टर्म है स्केल फैक्टर. So firstly you pick scale factors. Scale factors are defined as, अब ये है क्या, इनको S1 S2 से लिखते हैं कि पहली रो का मैक्सिमम. SI क्या है? मैक्सिमम मैट्रिक्स में से देखना है, कोफिशिएंट में से AIJ में, ठीक है, कॉलम जाना है और हर एक रो के लिए, यानी कि पहली पहली रो में देख लो सबसे बड़ी एंट्री कौन सी है, उसको आप S1 कह दो. सेकंड रो में देखो उसको आप S2 कह दो एंड सो ऑन. तो स्केल फैक्टर क्या है? हर एक रो में जो एंट्री सबसे बड़ी है मॉडुलस में. ओके, सो वी रिकॉर्ड दीज स्केल फैक्टर इन द बिगनिंग एंड दीज फैक्टर्स remain constant, remain unchanged throughout the procedure.
and at first stage of elimination, ऑफ कोर्स प्रोसेस तो गॉस एलिमिनेशन ही है कि ये सिर्फ ये पिक करेगा कि आपने डिवाइड किससे करना है. ओके, सो एट फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिमिनेशन वी कंप्यूट द रेशियो. रेशियो क्या कंप्यूट करना है आपने, जो फर्स्ट एलिमेंट है रो में AI1 उसको SI से डिवाइड कर लेना है. वी कंप्यूट द रेशियो एंड bring the pivot or you make the pivot and we make the pivot for which this ratio is largest, and then you repeat the procedure. I am explaining this by taking an example to solve 3 cross 3 system. Solve the system 2.11 x1 minus 4.21 x2 plus 0.921 x3 equals to 2.01, and you can solve the system using scaled partial pivoting. And second equation is 4.01 x1 plus 10.2 x2 minus 1.12 x3 equals to 3.09 minus 1.09 x1 plus 0.987 x2 plus 0.832 x3 equals to 4.21. ओके, फर्स्टली आपने लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज वी यू राइट इन गॉस एलिमिनेशन. और सब में जो मेथड है ना गॉस एलिमिनेशन ही है, उसी के गॉस एलिमिनेशन की अलग अलग वर्जन है ये. सो फर्स्टली राइट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स प्लस राइट हैंड साइड 0.921 then 2.01 4.01 10.2 minus 1.12 minus 3.09 1.09 0.987 0.832 4.21. Okay, and you can differentiate it. This is the right hand side and this is coefficient matrix. So firstly write scale factor. So what are scale factors? Scale factors are S1. फर्स्ट रो देखना है आपने तीनों को, ये राइट हैंड साइड नहीं देखना, सिर्फ मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा कौन सा है मॉडुलस में, मिडिल वाली एंट्री है 4.21, सो स्केल फैक्टर इज 4.21. S2 सेकंड रो में 10.2 है और थर्ड में फर्स्ट एंट्री है 1.09. ओके, इनको लेबल लगा दो E1 E2 E3. Okay, so these are scale factors. Some student make mistake, they कुछ तो साइन इग्नोर कर देते हैं कि तीनों कंपेयर करना है तो वो कहेंगे 2.11 बड़ा है. नो, मॉडुलस में रिलेटिवली कौन सा बड़ा है 4.21. ओके, और कुछ लोग राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं. राइट हैंड साइड नहीं देखना आपने, सिर्फ लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स में से कोएफिशिएंट यहाँ से ही स्केल फैक्टर पिक करने हैं आपने. ओके, देन यू कंप्यूट दिस रेशियो, यानी कि A11 को S1 से डिवाइड कर देना है और इसको S2 से, इसको S3 से. तीनों में जो सबसे बड़ा होगा दैट इज रिलेटिवली बिगर.
Okay, so now we compute, or you can say we need to pick the largest of फर्स्ट ए वन वन को आपने S1 से डिवाइड करना है 4.21 से। फिर सेकंड एंट्री 4.01 को S2 से 10.2 से। फिर थर्ड एंट्री तो 1.01 था, वही बिगर है। अब तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 2/4 है ये, लगभग 1 से छोटा है 4/10। A1 बन गया थर्ड, तो थर्ड ही लार्जेस्ट है। ओके, सो विच इज थर्ड एंट्री। तो फिर आपने करना क्या है? हेंस वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो नया मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे। अब थर्ड को फर्स्ट की जगह ले ले जाओ। 4.21। सेकंड सेम, सेकंड को कोई चेंज नहीं करना आपने। यानी कि ये जो एंट्री है दैट इज रिलेटिवली बिगर, एंड फर्स्ट फर्स्ट यहाँ आ जाएगा थर्ड की जगह 2.01। लेबल मैं वही यूज कर रहा हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, बिकॉज स्केल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। तो मैं इसको थर्ड लिख रहा हूँ, ये थर्ड आ गया यहाँ पे, ये सेकंड था और ये फर्स्ट था। अब आप लगा दो गॉस एलिमिनेशन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन मेक, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, बाकी तो सेम प्रोसेस है आगे गॉस एलिमिनेशन। सो राइट, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। अब सेकंड को क्या लिखोगे? सेकंड माइनस मल्टीप्लायर क्या होगा? 4.01 डिवाइड बाई 1.09। थर्ड ऊपर थर्ड है, थर्ड फास्ट है, ठीक है, ये लेबल ये यूज कर रहा हूँ। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, e2 माइनस 4/1.09, जस्ट सिंप्लीफाई इट, दिस इज 3.68। एंड जो फर्स्ट है लास्ट वाला, उसको क्या लिखोगे? फर्स्ट माइनस मल्टीप्लाई 2.11 डिवाइड बाई 1.09 e3। तो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा 1.94 e3। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा फर्स्ट एज इट इज, ओके, हियर यू गॉट 0। 10.2 की जगह क्या आएगा? 10.2 माइनस 3.68 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 3.68 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.987 से, फिर माइनस कर दो, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगा। दिस इज 6.57 माइनस 4.18 माइनस 18.6, और यहाँ पे माइनस 6.12 माइनस 0.689 माइनस 6.16। So this is my third, this is second, this is first। अब रिपीट करना है। अब यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों को देखो कौन सा रिलेटिवली बिगर है। ओके, सो नाउ वी नीड टू पिक द लार्जेस्ट ऑफ। अब आपने 6.57 को उस E2 है तो S2 से डिवाइड करना है 10.2 से, तभी मैंने नंबर साथ के साथ लिखा है। और जो 6.12 है, साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, 6.12 को, ये थर्ड है तो थर्ड का मैक्सिमा क्या था? 4 पॉइंट, सॉरी ये एक्चुअली फर्स्ट है, ये सॉरी, दिस इज फर्स्ट,
तभी मैंने लेबल वो लिखा है फर्स्ट। तो फर्स्ट का मैक्सिमा क्या था 4.21, तो 4.21 से डिवाइड करना है। दोनों में देख लो कौन सा बड़ा है, पहले 0.6 समथिंग आता है और ये 1.4, सो विच इज सेकंड एंट्री। तो सेकंड बिगर है तो मतलब इसका मीनिंग है दिस इज बिगर, 6.12 इज रिलेटिवली बिगर देन 6.57। तो फिर आपको एक बार और चेंज करना पड़ेगा। अब इनको स्वैप कर दो आपस में। सो व्हाट यू डू, जो E2 और E1 को आप स्वैप कर दो और दोबारा लिखो मैट्रिक्स को एक बार। फर्स्ट एज इट इज 0.83 टू 4.21 और यहाँ पे आप ले जाइए लास्ट वाला रो -6.16 और यहाँ पे आप ले जाइए सेकंड वाला 6.57। जस्ट इंटरचेंज एवरी एंट्री और नंबर उसी में लगा रहा हूँ मैं। ये थर्ड था और यहाँ पे फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड चला गया। नाउ अप्लाई गॉस एलिमिनेशन, राइट मल्टीप्लायर इफ यू वांट। M32 क्या होगा 6.57 डिवाइड बाई -6.12, दिस इज -1.07। तो जो लास्ट रो है सेकंड, उसको क्या लिखोगे, सेकंड माइनस मल्टीप्लायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाइम्स ऊपर वाली एंट्री ये वाली। सो न्यू सिस्टम विल बी first two rows as it is, just write all entry here, you got 0 और 4.18 की जगह क्या आएगा -4.18 प्लस 1.07 मल्टीप्लाई बाई 689.689। ओके, सो -4.92 है यहाँ पे -25.2। So now you got upper triangular matrix, right back substitution, लास्ट इक्वेशन आपको क्या देगा -4.92 x3 इक्वल्स टू -25.2, सो x3 इज 5.12। सेकेंड इक्वेशन 6.12 x2 -0.689 x3 equals to -6.16, solve for x2 which is 0.43. Similarly, from first equation 1.09 x1 plus 0.987 x2, x2 is 0.43 plus 0.832 x3, 5.12 equals to 4.21, and 4 from this x1 is -0.436, and this is a solution. Okay, you can write collectively if you want. So solution is x1, x2, x3. So first is -0.436, second is 0.43, third is 5.12. ओके, तो ये लेबल आपने ध्यान रखना है जब सेकंड स्टेज में, कंफ्यूजन नहीं करना। सेकंड स्टेज में जब आप डिवाइड करोगे तो ये एंट्री है, यहाँ देखना है कि सेकंड है तो इसके S2 से डिवाइड करना है, ये एक्चुअली फर्स्ट रो है तो इसको S1 से डिवाइड करना है। साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, व्हेन यू राइट स्केल फैक्टर्स दे यू टेक मॉडुलस। ओके, सो विच वन इज रिलेटिवली बिगर। हाँ, बट जब आप मल्टीप्लायर निकालते हो, जब व्हेन यू डू कैलकुलेशन देन साइन इज इंपॉर्टेंट, तब आपने ये साइन लिखना है, फिर आपने साइन के साथ करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ओके, so in that way you can modify Gauss elimination in two way. One is partial pivoting, another one is scaled partial pivoting.
Also there is one type of pivoting is also exists, that is known as complete pivoting. अब कंप्लीट में हम क्या करते हैं, हम एल्गो में ये सर्च करेंगे कि पूरी मैट्रिक्स में सबसे बड़ा कौन सा है। आप सारी एंट्री देखोगे ये मैट्रिक्स में सबसे बड़ा, बट अब प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो डिफिकल्ट है। जैसे मान सबसे बड़ा पूरी मैट्रिक्स में कौन सा है, 10.2 है सबसे बड़ा, 10 ही है सबसे बड़ा। तो फिर आप क्या करोगे, 10 को पहले लेके आओगे, तो क्या करोगे आप, इनको आप इंटरचेंज करोगे आप इनको। तो इक्वेशन को क्या लिखोगे, 10.2 x2 प्लस 4.01 x1 माइनस 1.2 x2 ऐसे लिखोगे। x2 को पहले कर दोगे आप, फिर इसको ऊपर लेके जाओगे आप। So we don't do that, is very, you can say, computationally expensive. Okay, so we have studied two type of pivoting. Any doubt in this before I stop? Okay, then see you in next class. Thank you.